Now we will discuss about a cellular structure, which is the next characteristics of living things. Okay. Now see, can you tell? Observe a honeycomb and a wall. What are they made of? Here, two pictures are shown to you. First is of a wall and another one is of a honeycomb. So, it is asked, what are they made of? वो किससे बने होते हैं? So, the honeycomb is formed of small cells. See, these are the hexagonal cells. See the pointer I am showing you. Each is the cell, hexagonal shaped cell. With these cells, the honeycomb is formed. Okay, and wall is made up of bricks which are firmly joined together. Understand? वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? ब्रिक्स से. और वो जो ब्रिक्स होते हैं वो कैसे एकदम एक दूसरे को पैक पकड़े हुए होते हैं, राइट? उससे एक मजबूत वॉल बनती है. We can say each brick as a cell. Okay. You may have seen the small compartments of a honeycomb. These compartments are joined together to form a honeycomb. These are the hexagonal compartments, yes, of the honeycomb, and they are joined together to form a honeycomb. A wall has bricks. Wall में क्या होता है? Bricks होते हैं. To construct a wall, we firmly join the bricks together. Yes. For constructing a wall, what we are doing? We are firmly join the bricks together with the help of the cement. Understand everyone? Living things are made up of small units called cells. Each living thing is made up of small units which are called as cells. Yes, सारे जो living things होते हैं वो किससे बने होते हैं? छोटे छोटे units होते हैं, उनको हम cells बोलते हैं. All the actions and processes in the bodies of the living things are brought about with the help of these microscopic cells. जो भी एक्शंस होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में या फिर लिविंग थिंग्स की बॉडी में, वो सारे किसकी वजह से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल्स. माइक्रोस्कोपिक सेल्स क्यों बोलते हैं हम उनको? क्योंकि हम इजीली नेकेड आइज से, खुली आंखों से हम उनको देख नहीं पाते हैं, इसलिए we are saying that cells as microscopic. Okay, see here, some living things are made up of a single cell. These are called unicellular organisms. Yes, for example, amoeba. This is a picture of amoeba. Amoeba is a single celled animal and we are calling it as unicellular organism. सिर्फ एक सिंगल सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी होती है, इसलिए हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. अंडरस्टैंड? ऑन द अदर हैंड, द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ many cells are called multicellular organisms. Yes, the amoeba and some other microorganisms are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan tree, the onion plant, etc. are all multicellular organisms. Yes. So here these are two examples. Amoeba and paramecium are single cell animals, and this cockroach, then pigeon, and many more like this elephant, then this snail. Okay, this big tree, banyan tree you can say, or people tree, whatever big trees are there, all are multicellular. See this plant. Okay, so many examples are given to you of the multicellular over here, such as man, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan tree, the onion plant. This is the onion plant. Okay, etc. are all multicellular organisms. Now you better understand which are the single cell animals and which are the multicellular animals. Okay, all the characteristics of the living things are seen in every cell of the living thing, whether it is unicellular or multicellular. But we can see all the characteristics whatever we have learnt till here in all the living things, whether it is unicellular or multicellular. Yes,
मतलब हम जो भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं या फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, वो हम दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं। मतलब यूनिसेल्युलर में भी देख सकते हैं और मल्टीसेल्युलर में भी देख सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है हर लिविंग थिंग्स का, इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरीज। मतलब अगर वो सेल्स का नंबर कम ज़्यादा भी होता है तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है हर लिविंग थिंग का। अंडरस्टूड? Till here we have learned all the characteristics of the living things. Okay, and from these characteristics or features we can say that these are the living things, and we cannot see these characteristics in non-living things. Okay, that's why we can differentiate between the living things and non-living things. Understood everyone? I hope you all understood this very well. Okay, now we will study about the institutes at work. Means for the survey, means collecting information about the plants or animals, some institutes at work. So which are the institutes are working for this, that we will see here. Okay, the institutes that work for the survey and conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India, which is established in 1890, and the Zoological Survey of India, established in 1916 respectively. Means for collecting the information about the plants and animals, and for conservation मतलब to protect that plant or animal or to conserve it, मतलब उनको संरक्षित करने के लिए ये जो दो मैंने अभी बताई आप लोगों को, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो इंस्टीट्यूट्स जो होती है वो काम करती हैं। ओके, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज फॉर प्लांट्स and zoological survey of India is for animals. Okay, in case you find you find an unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with these institutes to obtain more information about it. अगर आपके सराउंडिंग में आपको अगर कोई नया प्लांट या फिर नया एनिमल ऑब्जर्व होता है तो फिर आप लोग इन दो इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? टिल हियर we have completed. Okay, so if you like to watch my videos, you can subscribe it, like it, share it and comment it. Okay, thank you.